अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका क्रिकेट गुरु अली ज़िया, फॉर्मर क्रिकेटर एंड इंटरनेशनल कोच। आज इस दफ़ा हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी वापस आ गए हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 डिसीजंस हुए हैं एट पीसीबी हेडक्वार्टर। द फर्स्ट वन, पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई है T20 की फॉर द अपकमिंग सीरीज़ अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड एंड द वर्ल्ड कप, और दूसरा मिसबाह उल हक और वक़ार यूनुस की रेजिग्नेशन एज कोचेस ऑफ द पाकिस्तान टीम। सबसे पहले बात कर लेते हैं दो कोचेस की रेजिग्नेशन का। टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए एक सरप्राइज़ है बिकॉज यस, Misbah having a reputation basically of not very aggressive approach, whether he was a player or a captain and now as a coach. But अगर आप उसका T20 का record देखें as a coach तो इस बार the last 4 series out of the 5 series, ये शायद वनडे उतना अच्छा नहीं खेल सके स्पेशली इन इंग्लैंड, तो प्रॉबली वहीं से एक रेपुटेशन बन गई कि he is not good enough for white ball cricket. क्योंकि white ball cricket obviously is a very fast moving game और उसमें आपको एग्रेशन दिखाना पड़ता है, अप्रोच में भी, बैटिंग बॉलिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द गेम में आपको एक एग्रेशन दिखानी होती है। बट देयर टाइम्स व्हेन यू हैव टू बी डिफेंसिव ऑल्सो टू विन द गेम्स। सो ओवरऑल मुझे थोड़ी सी सरप्राइज़ है मेरे लिए कि इतनी जल्दी क्यों हटा दिया गया। मेरे ख्याल में चूँकि T20 में परफॉर्मेंस अच्छी थी पाकिस्तान टीम की, तो ही कुड हैव कैरिड ऑन फॉर दी T20। ठीक है, वनडे के लिए वो अभी कोविड से बाहर आया तो वनडे के लिए आप अनाउंस कर देते दूसरे मेकशिफ्ट कोचेस, लेकिन ही शुड हैव बीन रिटेन फॉर एटलीस्ट द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, और उसके साथ वक़ार यूनुस के। मेरे ख्याल में वक़ार यूनुस की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है विद द यंग बॉलर्स, इसलिए कि वसीम जूनियर की जो इम्प्रूवमेंट साइड से बॉल करने की और उसको रिवर्स आना, एंड देन द अदर यंग बॉलर शाहीन का टू बी वेरी एक्यूरेट और एक मेथड के साथ बॉलिंग करना, एंड द अदर फास्ट बॉलर्स ऑल्सो। So he's been quite good at that with those young fast bowlers. So as a surprise, दोनों का एक ही टाइम पे रिज़ाइन करना इज़ अनदर सरप्राइज। मे बी शायद उन्हें कोई मैसेज भिजवा दिया गया होगा, क्योंकि ये एक रूटीन बन चुकी है अब कि रेजिग्नेशन से पहले ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कि हम कह देते हैं जी कि मुझे फैमिली के साथ टाइम गुजारना है, बहुत टाइम मैं बाहर रह चुका हूँ। यस, देयर बीन इंसिडेंट्स इन द वर्ल्ड जहाँ पे कोविड की आइसोलेशन की वजह से बहुत से प्लेयर लाइक बेन स्टोक्स ने भी फ़िलहाल क्रिकेट से थोड़ा सा आराम लिया है, जो कि शायद इंग्लैंड को काफ़ी डेंट करेगा इन द T20। बट हमारे यहाँ ये बहुत कम होता है, हम आपस में भी बहुत ज़्यादा प्लेयर्स के साथ भी सोशलाइज करते हैं। गोरे थोड़े से इंडिविजुअल्स होते हैं और अपने क्वाइटली करते हैं, लेकिन आजकल के जो गैजेट्स हैं, सोशल मीडिया है, यू कैन कीप योर सेल्फ बिजी। जिससे अगर आप सिर्फ अकेले हैं, जैसे मिसबाह इन वेस्ट इंडीज़ था, और या कोई और प्लेयर अकेला आइसोलेट हो जाए, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट एज ए टीम अगर आप आइसोलेशन में हो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीरीज़ एंड ड्यूरिंग द सीरीज़, आई थिंक वो इतना पेनफुल नहीं है जितना एज एन इंडिविजुअल। सो हैविंग सेड दैट, good luck to the 2 new coaches, but I believe they are only as makeshift coaches. They might be retained in different capacity, but I don't see them being the head coach for long, क्योंकि जो speculations हैं वो है कि अब कोई फिर दोबारा गोरा कोच आएगा, and the reason behind that, rightly so, मेरा ख्याल है कि गोरा कोच है, though I'm not in favor of an outsider coming, but problem ये है कि गोरा with a lot of experience आता है। वो I remember एलन बॉर्डर जो था वो अंडर 19 से शुरू हुए थे, though he didn't continue as a coach, लेकिन वो अंडर 19 से शुरू हुए थे। हमारे यहाँ हम डायरेक्टली पाकिस्तान की कोचिंग करना चाहते हैं और उसमें आप थोड़ा सा नाकाम होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। मोस्ट ऑफ दी लोकल कोचेस स्पेशली इन पाकिस्तान हैव फेल्ड मोर देन बीइंग सक्सेसफुल। So in future if the Pakistani coaches have to retain their places, I believe कि उन्हें एक सर्टन लेवल तक इसकी एक पूरी
कोचिंग की जांच करनी चाहिए, प्रैक्टिकली वर्क करना चाहिए और फिर क्लेम करना चाहिए टू बिकम कोचेस ऑफ द नेशनल टीम्स विच इज़ द अंडर 19, देन द ए टीम्स एंड देन फाइनली द पाकिस्तान टीम. तो उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं. एंड देन वन मोर मैसेज और एडवाइस टू दी पाकिस्तानी कोचेस हु आर स्ट्राइविंग हार्ड टू बिकम national coaches in the future. Be a little bit bold and forthright. क्योंकि गोरा जो है उसमें एक तो वो बहुत डिसिप्लिन्ड है और वो जो कहता है वो करता है. हमारे यहाँ हम रूल्स को वायलेट करते हैं, सीनियर प्लेयर्स के लिए रूल्स डिफरेंट होते हैं. सो if anyone is inspiring to be a coach, my advice and message as a coach education or head of the coaches at times educating them, मेरा मशवरा ये है कि be bold, take your decisions boldly and stick to that and talk to the selectors or whatever with the captain, but carry on with your preparation of a team with the vision you have. तो फिर आप लास्ट कर सकेंगे. अदरवाइज इट विल बी अगेन अ मैटर ऑफ म्यूजिकल चेयर, जिसमें कभी कभी जब गोरा फेल होगा या कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो फिर प्रेशर बढ़ेगा, तो शायद एक आध पाकिस्तानी कोच आएगा एंड देन अगेन वी विल रिवर्ट बैक टू अ फॉरेन कोच which probably is not the only solution in my view. But good luck to these two coaches. I'm just speculating कि और जो लग रहा है with the news coming out of the headquarters कि गोरा ही होगा कोच and शायद उसके साथ कोई पाकिस्तानी कोच हो to make the players understand what he is saying. So good luck to the incoming coaches और जो भी new hierarchy आ रही है, Ramiz and his team और उनकी सोच में जो भी coaches है, good luck to all of them and good luck to the coaches who are already working and maybe they could also be part of the next assignments of Pakistan as Pakistan team coaches. अब बात कर लेते हैं जो टीम अनाउंस हुई है. देखिए, आई हैव अ फ्यू रिजर्वेशंस अबाउट दैट टीम, बट वो मेरा अपना ओपिनियन है कि आपने एक वनडे टीम अनाउंस की अ फ्यू डेज अगो, ठीक है, और टू बी ऑनेस्ट मेरे नज़दीक व्हेन यू टॉक अबाउट वाइट बॉल क्रिकेट ओवरऑल तो कोई मेथडोलॉजी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, एक्सेप्ट दैट कि T20 थोड़ा सा ज़्यादा श्रंक है एंड यू नीड समवन एज अ पावर हिटर. बट इन अ 50 ओवर यूजली ओपनर्स हैव अ स्लाइटली डिफरेंट माइंड सेट और हम स्ट्रगल कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में ज़्यादातर. तो जब वनडे क्रिकेट में ओपनर्स टेक मोर टाइम तो प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर के लिए ऑलमोस्ट सिचुएशन वो T20 की ही आ जाती है when they have to go for quick runs in chasing or to set a good target. उन्हें पावर हिटिंग करनी पड़ती है. हमारे यहाँ to be honest unfortunately power hitting का concept is very badly उसको डिस्प्ले किया जाता है. We only look for the strike rate 150 plus like that. बाबा अगर 130-40 एंड यूर अ मैच विनर, आपका स्ट्राइक रेट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होना चाहिए. येस देयर आर सम प्लेयर्स वो वेरी पावरफुल और हैवियर बैट से खेलते हैं, दे कैन क्लियर द बाउंड्री मच ईजियर देन द अदर, बट दे आर ऑल्सो मोर रिस्की टू गेट आउट ऑल्सो. सो एट टाइम्स इज अ क्रूशल टाइम. अगर एक प्लेयर ज़मीन पे खेल के रन्स कर सकता है 10 to 12, वो हवा में खेल के ज़्यादा रिस्क लेता है एंड यू स्टार्ट लूजिंग द विकेट्स. दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग विद द माइंडसेट ऑफ पावर हिटिंग. तो हम ज़्यादातर मैच हार जाते हैं. देयर बीन ग्रेट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड लाइक पाकिस्तान में ज़हीर भाई हैं, सलीम मलिक है, यूसुफ है जो रहे हैं, मियादाद रहे हैं, एंड देन अदर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड ऑल्सो. वो कितने प्लेयर्स थे जो सिर्फ छक्के ही मारते थे एंड स्टिल येस द गेम हैज़ इवॉल्व्ड, इसमें कोई शक नहीं, बट दे वर ऑल्सो वेरी गुड हिटर्स. अगर हम हिटर्स की बात करें एंड दे कुड स्कोर क्विक रन्स एट ईज विदाउट टेकिंग मच रिस्क.
सो एक तो ये कॉन्सेप्ट आई डोंट थिंक सो कि इतना क्लियर है इन पाकिस्तान विद पीपल हु आर सेलेक्टिंग द टीम। बस एक फोबिया है कि जी पावर हिटिंग जो छक्के मार रहा है इतना बड़ा छक्का, फॉर एंटरटेनमेंट दैट्स फाइन, टेलीविजन में ऑडियंस के लिए इट्स गुड, बट फॉर द टीम एट टाइम्स इट इज नॉट ऑलवेज गुड। सो ये एक बैलेंस रखना चाहिए, and that is one reason we are struggling in the middle order, क्योंकि we are going only for players जो power hitter rather than having a solid technique and power hitters. So एक तो ये इस पे मैं बात करना चाहता था। दूसरा कि अगर आप एक B क्लास से C क्लास टीम न्यूजीलैंड जो वनडे खेले थे, इट वुड हैव बीन बेटर इफ द सेम प्लेयर्स जो आपने वर्ल्ड कप में अनाउंस करने हैं उसको आप यहाँ पे खिलाते। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपने शर्जील को वनडे में रखा है एंड नॉट इन द T20 वर्ल्ड कप। अगर फिटनेस यहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी थी तो वहां क्यों की गई? और अगर फिटनेस की बात करते हैं तो आजम की फिटनेस इज ओवरऑल सिमिलर टू शर्जील। इसलिए मैं फिटनेस पे बात नहीं करना चाहता। सुनने में यह है कि जी फिटनेस टेस्ट होगा, एंड आई डोंट थिंक सो। मेरे ओपिनियन में अगर वो जेन्युइनली फिटनेस टेस्ट करवाया जाए, देयर आर फ्यू प्लेयर्स हु आर गोइंग टू फेल, देन एज यूजुअल इन द पास्ट हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, एंड दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम कि हमारी सारी जो प्लानिंग होती है ना, इट्स बेस्ड एट टाइम्स बेस्ड ऑन, और फाइनली वो ख़राब होती है विद कॉम्प्रोमाइजेस। सो हैविंग सेड दैट, जब आप वनडे की टीम चुन रहे हैं, अब अगर इफ्तिखार को जैसे मैंने कहा, देखिए ही इज़ गॉट अ बेटर रिकॉर्ड इन T20 एंड अ स्ट्राइक रेट देन वनडे क्रिकेट, और अगर वो बहुत अच्छा खेलता है, ही इज़ गॉट द पोटेंशियल, उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, इज़ अ वेरी यूजफुल प्लेयर, अ ब्रिलियंट फील्डर, लेकिन अगर आप उसका रिकॉर्ड देखें तो ही इज ओनली प्लेड 7 वनडेज इन, और ऐसे लग रहा है जैसे इफ्तिखार पिछले 5 सालों से 4-5 सालों से खेल रहा है। आसिफ अली इज अ गुड चॉइस, बट देन अगेन आसिफ की द सेम प्रॉब्लम, आसिफ को भी आप वनडे में डालते ताकि उसे प्रैक्टिस होती है और आप देखते कि उसका पोटेंशियल तो ऑब्वियसली हमेशा उसके पास रहा है, लेकिन उसके अपने माइंड में क्लैरिटी नहीं, या उसको क्लैरिटी दी नहीं गई कि जो अगर आपको चौथे नंबर पे खिलाते हैं तो व्हाट शुड बी योर रोल, व्हाट शुड बी योर माइंड सेट, और अगर आप नीचे खेलते हैं देयर डिफरेंट मेथड्स टू प्ले एट नंबर 4 एंड देयर डिफरेंट मेथड्स टू प्ले एट नंबर 6 एंड 7। आपको कई दफ़ा टेलेंडर्स को लेके चलना पड़ता है टू विन अ गेम और टू सेट अ टारगेट, एंड एट 4 यू आर अ लिटिल बिट एट ईज, यू हैव गॉट टाइम, आपके साथ बैट्समैन खेलते हैं, सो दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। एट टाइम्स आसिफ अली को फार टू मच मनूवर किया गया इन द बैटिंग ऑर्डर, बट आई स्टिल बिलीव कि आपके मिडिल ऑर्डर में ही इज़ द बेस्ट ऑप्शन एज अ डिसेंट हिटर विद अ डिसेंट टेक्निक। और जैसे मैंने कहा कि इतना फ़र्क रखना नहीं चाहिए था। वनडे में भी आप वही टीम अनाउंस करते, यू नो न्यूजीलैंड इज़ अ वेरी डिप्लीटेड टीम, सो एटलीस्ट T20 से पहले the players could have come back in form, they would have seen the opposition bowlers और उनके अगेंस्ट वो खेलते and would have been more confident. What happens if the players in one day, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं? So overall yes, the team is good and has got a good chance because especially in UAE conditions, but then I'm also surprised by Fakhar Zaman in reserves. अगर सेकंड विकेट कीपर आपने लेके जाना था, I've got nothing against the young boy Azam Khan. He's got a decent technique, he's a good power hitter, hasn't been that successful in our cricket. Yes, he's been reasonably successful in CPL and other minor leagues, but the standard of PSL is much higher than those leagues. और वहाँ पे at times when you can win the games, Azam has struggled in his power hitting and hasn't scored to the level everyone is predicting about him. So a youngster hai, he's got the time, he has to still work on his fitness. As a reserve wicketkeeper, he could have been kept in the reserve and Fakhar Zaman should have come up. If you're not taking Sharjeel, because it could have worked in the favor of a Pakistan team also, because Babar is a solid option. So if you open with Fakhar Zaman and Rizwan, with him being so successful, Babar can always come at number 3. So that brings a depth
to your middle order with experienced Hafiz ka aana at number 4, and then you can pick either of those, Asif Ali and Khushdil, or both of them, and then you've got decent all-rounders in Shadab. Surprised to see Fahim go in T20 cricket. He's not been, unfortunately, a match winner. Again, one of those players who hasn't got the clarity of his role. He plays well in Test cricket, which is actually more difficult in terms of scoring runs than T20 and one day, because over there the technique is exposed. Then he's worked with, I think, Yusuf, and his technique looks better, especially the defensive technique, and he batted quite well in the Test matches. But unfortunately, whenever he comes in T20 cricket, he is in too much of a hurry. So whether he does not understand his role in the game, or either he hasn't been conveyed the actual role what he's there for, because he's been always a decent bowler. So that's another surprise for me, that he hasn't been picked at least for white ball cricket. But having said that, good luck. Now the team is announced. We can't talk much about it. Then we can only say good luck to Pakistan team for all the coming series and the World Cup, especially the World Cup, because it's a tough group. I believe people are talking about the other group, that it's a death group, but I believe this is also going to be tough. Don't look at the New Zealand performance against Bangladesh. In fact, that series has been entirely based on कि आप टॉस जीतो और मैच जीत जाओ. ये हुआ है 2 मैचेस में. बांग्लादेश टॉस जीती, वो जीत गई. न्यूजीलैंड तीसरे T20 में जीता और बांग्लादेश 90 में आउट हो गई. सो न्यूजीलैंड एक काफ़ी टॉप क्लास फोर्स होगी इन T20 at UAE also, because the games at Sharjah are high scoring games और वहाँ पे कोई इतना खास टर्न नहीं होता. शारजा में these pitches are going to be prepared by ICC, not जब हमारी होम सीरीज़ होती थी तो हम अपनी मर्ज़ी की पिचेस बनाते थे. एंड शारजा इज़ अ स्मॉल ग्राउंड. वी हैव बिग हिटर्स, दे हैव बिग हिटर्स, they have quality bowling, we have quality bowling, but they have been they're more solid in the middle order. We have been still struggling in the middle order. So there's a bit of edge of conditions Pakistan ki favor mein, but overall with the New Zealand as a unit has gotten edge. So New Zealand is there, and the first match is against India. India has always been heavy on Pakistan. हमेशा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान उनसे हार गया, और ये मेरे लिए बड़ी सरप्राइज है. पाकिस्तान उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में हरा देता, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग ट्रॉफी. लेकिन वर्ल्ड कप में कई दफ़ा T20 में भी जीता हुआ मैच, स्पेशली द फर्स्ट वन 2007 में, दोनों मैच इन द पॉकेट, और एक टाई हो गया, और देन सुपर ओवर में हार गया, और एक पाकिस्तान फाइनल हार गया. एंड सिंस देन Pakistan hasn't won against India in the World Cup. But जहाँ तक चैम्पियंस ट्रॉफी का या अदर बायलैटरल सीरीज होती है, वहाँ पाकिस्तान आराम से जीता है. सो इट्स गोइंग टू बी अ हैवी वेट मैच, और मेरे ख्याल में इट विल बी अ क्लोज इनकाउंटर. एज अ पाकिस्तानी, आई विश पाकिस्तान टीम गुड लक, और आई होप कि ये जो एक जमूद सा है, एक जो ये प्रॉब्लम है, आखिरकार पाकिस्तान टीम इसको तोड़ दे और अच्छा स्टार्ट ले फॉर द T20 वर्ल्ड कप इन दुबई. ये मैच है. सो गुड लक टू देम. कम ऑन पाकिस्तान टीम, यू कैन डू इट. अल्लाह हाफिज़.